we had start our discussion on security management. We know that security is most important part of each and every application which we created. So Salesforce basically provide you a security management where they provide us a 9 component which we discussed already uh, in our first lecture relevant with my security management. You can see we have 9 components with us. One is profile, roles, public groups, queues, OWD, sharing rules, permission sets, manual sharing, creating and managing users. Right. Now, out of which we already discussed about how to create and manage the user. We also discussed about what is profile, what are the permissions given into the profiles. Then we also see how we are going to cross the limitation of custom profiles, standard profiles by creating a custom profile. And then we also talk about the rules. We also talk about how to create a public groups. We also talk about how to create a queues. Now today we are going to talk about the new topic called OWD. So what is in the OWD? So basically OWD is nothing but organization wide default. So what is organization wide default is all about? So organization wide default or organization wide sharing settings determine default or baseline level of access for all records of an object. Organization wide default can never grant the user more access than they have through their object permissions. तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट में एक जनरलाइज लैंग्वेज में अगर आपको बोलूँ तो ये डिफॉल्ट सेटिंग होता है फॉर ऑल द और टू द ऑर्ग लेवल मीन्स ऑर्गेनाइजेशन लेवल. सो हम लोग किसी भी एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कॉमन होते हैं थ्रू आउट द एम्प्लॉयज, वो हायर लेवल एम्प्लॉयज हो या लोअर लेवल एम्प्लॉयज. सो ऐसे कुछ सेटिंग्स हम लोगों या फिर ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अगर सेट करना then we set all those permissions or all those restrictions to the organization wide default. So अगर किसी ऑब्जेक्ट को रिस्ट्रिक्ट करना है फ्रॉम एक्सेसिंग वन यूजर टू अनदर यूजर, राइट, ये डिफॉल्ट बोल दिया है कि देखो consider an example. Employee will fill up the appraisal, right? And then they are going to be marked by their manager, and then they transfer to their higher authorities. Then their higher authorities also marks by their own knowledge how the employees are. तो फिर वो उनके मार्क्स फिल अप करते हैं एंड देन आफ्टरवर्ड योर अप्राइजल गेट अप्रूव्ड, राइट. तो जनरली क्या होता है व्हेनेवर यू राइट योर अप्राइजल तो मैनेजर ने जो मार्किंग आपको किया है वो आपको कभी पता नहीं चलेगा, बट दैट मार्किंग इज नीड टू बी शोन टू द हायर ऑथोरिटीज ऑफ योर कंपनी. Similarly, what you fill in your appraisal that should be visible only to you as well as your higher authority, not to other employee or not to other colleagues of yours. ओके तो आपके दूसरे कलीग्स को शो नहीं होना चाहिए लेकिन हायर ऑथोरिटीज को शो होना चाहिए. फिर हायर ऑथोरिटीज में मैनेजर ने जो फिलअप किया है वो उसके दूसरे कलीग्स को नहीं शो होना चाहिए, आपको शो नहीं होना चाहिए, बट दैट नीड टू बी शोन टू द हायर ऑथोरिटीज. और हायर अथॉरिटीज उधर क्या रिमार्क कर रहा है ये मैनेजर को नहीं दिखना चाहिए, मतलब लोअर लेवल पे नहीं दिखना चाहिए, उसके लेवल पे वो सारी चीजें विजिबल होनी चाहिए. बट इन हायर लेवल वो जितने भी अथॉरिटीज हायर लेवल पे उनको सबको शेयर करना है हम लोगों को वो अप्राइजल, राइट. तो ये सिचुएशन में हम लोगों ने क्या किया, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफॉल्ट ये परमिशंस होनी चाहिए. तो ये कॉमन है ना. तो ये कंपनी जहां जहां पे भी रन होगी वहां पे ये सिचुएशन कॉमन होगी. सो ऑर्ग लेवल पे हमको ये सेटिंग्स करनी पड़ती है एंड टू डू दैट वी हैव दिस ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट called OWD, right. Now let's go ahead and go to your developer org.
log into your developer org, and in this developer org, we are going to set OWD, and to check OWD, you need to search for OWD in a quick file. If I search for OWD in a quick file, you can see nothing is going to be displayed. So where is my OWD now? So we need to search for sharing settings. So basically, it is a permission sets on your sharing. किसको share करना है, किसको नहीं करना है. That's why this OWD comes under the topic called share settings. So ये share settings के अंदर जाना पड़ेगा आपको. Once you click on share settings, let the window open. Okay. In the share settings, you can clearly see the term called OWD over here called organization wide default, right? And you can read whatever the definition is given over here. It shows that this page display your organization sharing settings. These settings specify the level of access your user to each other data. मतलब एक यूजर दूसरे यूजर का कौन सा डेटा देख सकता है, कौन सा नहीं देख सकता है. ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जब आप सेटिंग करना चाहते हो तो आप जनरली शेयर सेटिंग्स में जाके OWD करते हो. Go to your background job to monitor the progress of a change to organization wide default or parallel sharing रिकैलकुलेशन. तो बेसिकली जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये जो हम लोगों ने पढ़ा है, गो टू द बैकग्राउंड जॉब्स एंड मॉनिटर, ये सारी चीजें क्लियर है. तो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट OWD ओवर हियर. तो जैसे मैंने बताया, OWD इज ऑर्गन. हेलो, सॉरी फॉर इंटरप्शन, नेटवर्क चला गया था. ओके, हम लोग थे OWD पे. OWD क्या करता है, अगर एक यूजर से दूसरे यूजर को कुछ डेटा हाइड करने का है तो आप यहाँ पे कर सकते हो. So in this OWD, we have a various level of permission sets. You can see there are various levels of permission sets present over here. First is your public, and in this public, you can see there are sub permissions also. So what is public is representing over here, and what are the sub services are there. वो अभी हम लोग explore करते हैं. So basically, you can see there are various objects present over here. You can see lead, you can see contact, order, opportunities, campaign, activity, calendar, right? So ये कुछ objects है जिसका हम लोगों ने already use किया था. तो यहाँ पे आप देख सकते हो there are number of objects present over here, and at the bottom line you can see your custom object also, like post, department, employee, purchase, student, trainer, which we created before that. So यहाँ पे ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का डेटा एक यूजर से दूसरे यूजर से हम दूसरे यूजर को हमको हाइड करने का है, शो करने का है. ये सेटिंग्स अगर करना है तो OWD में आते हैं. तो OWD आपको जनरली कौन से परमिशन देता है, तो पहला था हमारा पब्लिक. सो व्हाट इज मीन बाय पब्लिक? पब्लिक मीन्स आप एक दूसरे का डेटा देख सकते हो, राइट? Under which we have an option called read write. Also you can see the option called read write transfer. You can also see the option called read only, right? You can see the option read write. So what is mean by read write, what is mean by read only, what is mean by read write and transfer? So basically understand, read only का मीनिंग होता है कि आप सिर्फ डेटा, मतलब एक यूजर दूसरे यूजर का डेटा देख सकता है. ही इज नॉट गोइंग टू मॉडिफाई और परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन दैट पर्टिकुलर डेटा. दूसरा आता है रीड राइट. व्हाट इज मीन बाय रीड राइट? यू आर नॉट ओनली सपोज टू रीड द डेटा फ्रॉम अदर यूजर, बट यू आर एबल टू मेक चेंजेस इन दैट पर्टिकुलर डेटा. ओके, सो एक यूजर ने अगर कोई डेटा फीडअप किया है इनटू कोर्स, तो मैं एक यूजर हूँ, यूजर 1, और इफ आई एंटर सम डेटा इनटू माय कोर्स ऑब्जेक्ट, राइट, तो वो डेटा हमको किसी को शो करने का है और उसने सिर्फ रीड करना चाहिए, उस पे ऊपर कोई ऑपरेशन या फिर उसमें कोई चेंजेस नहीं करने चाहिए, तो हम रीड ओनली ऑपरेशन देंगे.
अगर हमको उसको अलाउ करने का है, नॉट ओनली टू रीड द डेटा बट ऑल्सो मॉडिफाई द डेटा, देन वी गिव द परमिशन रीड राइट. And what is meant by then read write and transfer? Okay, so what is the meaning of transfer? So basically it is relevant with the ownership. So I am going to explain you what is meant by ownership. So for that I need to go to app launcher, and in app launcher I need to search for my application called TMS. I am going to open this into a new tab. Let it be open into the new tab. I will show you what is ownership is all about. If I go to my student object, you can see a various record present over here. What I'm going to do now, I'm going to open one of the record, student record. And in this student record, you can see this owner field over here. What it defines this particular record is belonging to this owner. Which owner? Host instructor, right? तो ये डेटा किसने क्रिएट किया है? तो यहाँ पे क्रिएटेड बाय करके एक फील्ड होगा. यू कैन सी इट शोज दैट दिस पर्टिकुलर डेटा इज क्रिएटेड बाय होस्ट इंस्ट्रक्टर. एंड हु इज द ओनर ऑफ दिस डेटा? द ओनर ऑफ दिस डेटा इज ऑल्सो होस्ट इंस्ट्रक्टर. सो व्हेनेवर यू वांट टू चेंज, क्या बोलो फिर से सुनो, व्हेनेवर यू वांट टू चेंज द ओनरशिप of a particular record, then we use this transfer. So if you want not only to read this data, not only to modify this data, but also you want to, or you are able to change the ownership, then you can use this option called public read write and transfer. Full access is also relevant with the read write and transfer. इसके अलावा अगर कोई ऑपरेशन लाइक से डिलीट वगैरह करने का है, then you can put a full access to that, right? And then we have something called private. So to whom you call private? If you want to hide that particular records relevant with particular user, वो अगर हमको हाइड करना है दूसरे यूजर से, तो हम जनरली प्राइवेट करते हैं. तो फर्स्ट यूजर का डेटा सेकेंड यूजर को शो नहीं होगा, सेकेंड यूजर का डेटा फर्स्ट यूजर को शो नहीं होगा, राइट? सो इफ यू वांट टू मेक दिस काइंड ऑफ एन ऑपरेशन, देन you have the second option called private. Then you can also see there is an option called controlled by parent. So to whom you call controlled by parent, so basically it is relevant with the child data. So if you go to my TMS application and if you open these courses, okay, and if you click on one of the courses, फिर इधर आप देखो, इधर आपको कहीं पे भी ओनर नाम का फील्ड नहीं मिलेगा. Have you seen owner field over here? You can see created by, किसने ये रिकॉर्ड क्रिएट किया था, किसने मॉडिफाइड किया था, कब किया था, वो दिखेगा. बट यू हैवंट सीन द ओनर फील्ड इन दिस पर्टिकुलर कोर्स ऑब्जेक्ट. ओके, तो ये रिकॉर्ड के अंदर ओनर फील्ड ही नहीं है. इसका मतलब हु इज द ओनर ऑफ दिस रिकॉर्ड, और इस रिकॉर्ड का ओनर कौन है? तो बेसिकली courses is a child object of my trainer. So whenever you have a child object, तो इसका ओनर कौन होता है? इसका ओनर होता है पेरेंट्स, राइट? सो whenever you want to transfer the control to our parent of that particular object, then you have to set the permission control by parent, right? Then these are the permission sets which basically provided. यही इंपॉर्टेंट है. अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग एक काम करते हैं, एक यूजर का डेटा दूसरे यूजर के डेटा से हाइड करेंगे. एंड लेट्स ट्राई टू सी इज इट पॉसिबल और नॉट. टू डू दैट आई हैव an edit option over here. Let's click on edit. And once I click on edit, what I need to do, I need to search for my appropriate object जिसके ऊपर मुझे ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है. लेट्स चूज द ऑप्शन कॉल्ड स्टूडेंट. तो मैं स्टूडेंट नाम का जो मेरा ऑब्जेक्ट होगा, तो एक स्टूडेंट और सॉरी एक यूजर ने क्रिएट किए हुए स्टूडेंट रिकॉर्ड दूसरे यूजर को शो नहीं होने चाहिए. ये मुझे करना है. तो टू डू दैट यू नीड टू चेंज द परमिशंस.
from public read write to private. So you just need to set private in both the places, and then you need to finally click on save. Now, once you click on save, you get some message over here. If you read that message carefully, then you will come to know कि क्या होने वाला है. यहाँ पे लिखा है one or more sharing operation has been initiated. एक या एक से ज्यादा ऑपरेशन इनिशिएट हो चुका है. See below for additional detail. नीचे additional detail दिया होगा. Certain operation may not be available. इसका मतलब है कि ये ऑपरेशन अवेलेबल नहीं है. Let's go ahead. You can see there is no such permission is available over here. What I am going to do now, I need to change once again a different object over here. So let's click on edit. Let's try to change. Let's try to change trainer data this time. You need to click on private and just need to click on save. So this time यहाँ पे भी बोल रहा है certain operation may not be available. Why this is so? यहाँ पे लिखा है host instruction made an all default update on trainer. You can submit the changes after the operation completes. You can submit changes after the operation completes. By default, these are the after the operation completes. Okay. What is the meaning of this? इसका meaning ये है कि there are multiple operations and multiple data present on your Salesforce org because it is a multi-tenant cloud-based system. तो यहाँ पे millions of records हो सकते हैं जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करते हो, तो क्योंकि सारे लोगों का डेटा उसी ऑब्जेक्ट के अंदर जाता है, इफ इट इज अ कॉमन ऑब्जेक्ट. तो ऐसी सिचुएशन में आपका डेटा सॉर्ट आउट करके ये शेयरिंग रूल्स अप्लाई करने के लिए इट विल टेक सम टाइम. ओके, सो जब तक आपको मेल नहीं आता है तब तक ये ऑपरेशन सेट हो चुके हैं ऐसा कंसिडर नहीं कीजिए. जब आपको मेल आ जाएगा, इट मीन्स दैट नाउ यू आर एबल टू परफॉर्म दिस काइंड ऑफ एन ऑपरेशन. इसका मीनिंग होता है. सो वी मेक दिस चेंजेस, बट राइट नाउ दिस चेंजेस इज नॉट गोइंग टू बी कवर्ड अप. ओके, तो ये स्टूडेंट्स को हमने प्राइवेट तो किया है, लेकिन ये प्राइवेट नहीं हुआ है अभी तक. क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि इट रिक्वायर्ड सम टाइम टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर एक्शन. मतलब वो प्राइवेट करने के लिए हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा. एंड whenever we got this mail कि okay your OWD settings now been changed, okay, तब ये changes reflect हो जाएंगे हमारे. So to do that, what I'm going to do now, I'm going to open my another browser, check whether the things have been done successfully or not. Let's go to your login.salesforce.com. And what I'm going to do now, I need to log in with my second user. So I need to log in by using host instructor, sorry, instructor underscore second at the rate innovation dot com. So this is my email ID, and I need to log in by using the password. Let's click on login. Let me verify this by using a mail. Let me open my mail. Open your email. You will get this code, security code for this login. Let's verify. And let's copy this code and paste over here and then verify. Now, if you go to your mail, you can see
you have received a mail relevant with the OWD operations, and if you open this particular mail, then you can see that your request to change your organization wide sharing default has successfully completed. देखो मैंने बोला था आपको जब तक मेल नहीं आता है तब तक ये ऑपरेशन सक्सेस हुआ है कि नहीं हुआ है ये पता नहीं चलेगा। नाउ यू गॉट द मेल, इसका मतलब है कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट अभी प्राइवेट हो गया है। एक यूजर ने ऐड किया हुआ डेटा दूसरे यूजर्स को यहाँ पे शो नहीं होगा। दैट्स द रीजन वी लॉग इन विद अ सेकेंड यूजर फॉर होस्ट इंस्ट्रक्टर सेकेंड, एंड इन Chrome I have host instructor as a login. Okay, so you can see, go to your students, and if you check for the student list, you will get this all the data present over here. But if you go to your another browser, you can see this object, but if you open this, you can't see anything over here, right? Nothing is displayed over here. Why it is not displayed? OWD, right? Because we set the OWD, तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स होस्ट इंस्ट्रक्टर ने क्रिएट किया है वो होस्ट इंस्ट्रक्टर 2 को शो नहीं होगा, और जो रिकॉर्ड होस्ट इंस्ट्रक्टर 2 क्रिएट करेगा वो रिकॉर्ड होस्ट इंस्ट्रक्टर को शो नहीं करेगा। तो फर्स्ट यूजर का डेटा सेकंड यूजर से हाइड हो जाएगा, सेकंड यूजर का डेटा फर्स्ट यूजर से हाइड हो जाएगा। Okay, so we don't have anything over here, but if you let me check anything displaying all or not. I think ये display कर देगा यहाँ पे। Now you can see this particular data over here because we have same profile for host instructor 2 as well as host instructor for both the account. That is the reason it is going to be shown all the data over here. So we have a list of almost 21 records. If you go there, then if you check for all the records, I think here also we have a record of 21 students. Okay, let me create one new record with a name called Kirti. Okay, student ID, email ID is kirti@gmail.com. Degree, I need to select some degree. Mobile number, username, one, password, one, country. Let's choose a country. Let's choose a state, and let's choose a section. Let's try to save this. Now you can see this record has been created successfully. So we have now 22 records with us. So I hope we have 22 records with us now. अभी थोड़ा सा होप करते हैं कि ये रिकॉर्ड शो ना हो, because we set it as a OWD. OWD से हमने शेयरिंग इसका रिस्ट्रिक्ट कर दिया। I hope it is not going to show that particular record. It is showing that record. तो इसका रीजन बस इतना ही मैं बता सकता हूँ आपको कि इट इज शोइंग बिकॉज दे हैव शेयर द सेम परमिशन सेट्स प्रोफाइल। ओके, ये इसका भी लाइसेंस होता है सेल्सफोर्स का है, और बेसिकली जो होस्ट इंस्ट्रक्टर 2 बना है उसका भी लाइसेंस, इट इज अ रेप्लिका कॉपी ऑफ योर सिस्टम एडमिन। सो उसका भी सेल्सफोर्स एज अ लाइसेंस है, इसकी वजह से ये रिकॉर्ड्स बेसिकली शो हो रहा है बिटवीन दिस टू यूजर। अदरवाइज OWD आपके ये शेयरिंग्स को हाइड कर देता है। लेट मी गो टू दिस शेयरिंग सेटिंग्स, लेट मी रिफ्रेश दिस पर्टिकुलर पेज।
in this, let me check if it is now private or not. The student object now let's move ahead. Now basically it is set to the student object correctly, but still it is showing me. Let me rectify. Is there any other reason or not? Let me check is there any other reasons there or not. Let me click on edit. And we have set it to trainer and student as a private. This time. From the last response, making performs a reading of question is it possible? Yes, it is possible. There are two possibilities over here. The first possibility, which I already told you, that because they have a replica copy of their profile, that's the reason because they have all same kind of a permission set. That's the reason they are able to access those data. ये एक रीजन हो सकता है, या फिर सेकेंड रीजन हो सकता है कि दो इट शो मी दैट योर शेयरिंग हैज बीन sharing default has been set successfully, but it may have possibility कि इसका भी डेटा भी completely successfully हमारी सेटिंग्स नहीं ली है ना, तो दोनों में से एक रीजन हो सकता है, दैट्स द रीजन बेसिकली ये सारी चीजें वर्कआउट नहीं कर रही है हमारे लिए. सो लेट इट बी एज इट इज, वी विल मूव फर्दर एंड एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं. मीनवाइल अगर ये प्रॉपरली रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज आई नीड टू चेक फ्यू मोर रीजंस, आई नीड टू सर्च आउट ऑन दैट क्यों ऐसा हुआ है, एंड देन वी विल कम अप विद द सॉल्यूशन ऑन टुमारो. नो नो इशू, ये होता है कभी कभी. अगर इसका सॉल्यूशन क्या है हमको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा. नो इशू. नाउ let's go ahead and let's talk about another security management component called sharing rules. Now what is sharing rules? अभी क्या होता है, देखो OWD क्या करता है, आपका रिस्ट्रिक्ट करता है. सपोज करो आपने रिस्ट्रिक्ट कर लिया स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को फ्रॉम एक्सेसिंग वन यूजर टू अनदर, बट due to some reason, if one of the employees is get sick and he is on leave, बट उसका जो काम है, उसने जो क्रिएट किया हुआ डेटा है, वो डेटा मुझे एक्सेस करने का है. और हमने सेटिंग्स तो OWD की कर लिया कि एक यूजर का डेटा दूसरा यूजर एक्सेस नहीं कर पाएगा. ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हमने ये सारी सेटिंग्स करके रखी है. और ड्यू टू सिक लीव ही इज नॉट अवेलेबल, बट आई वांट दैट पर्टिकुलर डेटा बिलोंगिंग्स टू दैट यूजर. तो ऐसी सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए, बिकॉज वी ऑलरेडी सेट OWD सेटिंग, ऐसी सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए फिर हम लोग शेयरिंग रूल्स करते हैं. तो शेयरिंग रूल्स बेसिकली करता है क्या है, शेयरिंग रूल्स आपके जो OWD के रिस्ट्रिक्शंस है, उस रिस्ट्रिक्शन को थोड़ा सा कम करने का या फिर उसको एक्सटेंड करने का काम करता है बेसिकली. तो
अब जैसे मैंने बोला आप लोगों को कि वन यूजर कैन नॉट एबल टू सी दैट पर्टिकुलर डेटा, सो वी हैव 5 यूजर विद अस, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4 एंड यूजर 5। यूजर 5 सिक लीव की वजह से आ नहीं सकता है। यूजर 1, यूजर 2, 3, 4, 5 का डेटा नहीं देख सकता है, 2, 1, 3, 4, 5 का नहीं देख सकता है। सो नो यूजर आर एबल टू वॉच और चेक देयर डेटा, चेक ईच अदर डेटा। ओके, तो अब ये सिचुएशन में अभी हम लोगों को जो यूजर 5 सिक लीव पे है उसका डेटा किसी को एक्सेस करने की परमिशन देना है ना। सो आई वुड से कि यूजर 5 का डेटा मुझे यूजर 4 निकाल के देगा। अब ये सेटिंग्स अगर आपको करना है, वी नीड टू रिलीज दैट OWD settings or a permissions, or you want to something release the permission sets or release the permission restriction given by the OWD, then we use basically a sharing rules, right? So इधर जाते हैं, go to your sharing setting, and below this OWD you can see there is a something called sharing rules. ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे शेयरिंग रूल्स लिखा है। तो आप क्या कर सकते हो, OWD में जो रिस्ट्रिक्शंस है उस रिस्ट्रिक्शन को थोड़ा सा कम कर सकते हो बाय यूजिंग अ शेयरिंग रूल्स। नाउ लेट अस कंसीडर कि सपोज करो, अभी तो हो नहीं रहा है, लेकिन सपोज करो कि स्टूडेंट का डेटा, यूजर 1 का डेटा यूजर 2 को शो नहीं हो रहा है, यूजर 2 का डेटा यूजर 1 को शो नहीं हो रहा है, बट आई वांट OWD का सेटिंग होने के बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि यूजर 1 का डेटा यूजर 2 ने देखना चाहिए, नॉट नॉट टू अदर बट ओनली टू द यूजर 2। तो वो रिस्ट्रिक्शन कम करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, वी गो टू शेयरिंग रूल्स, एंड इन द शेयरिंग रूल्स वी हैव नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर देयर, एंड यू कैन राइट, you can choose your object and you can write your sharing rules on that particular object. So इसी तरह से मैं जाऊंगा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में। So student object is a custom object which is already which is sorted in at the bottom। तो यहाँ पे बॉटम में आपको स्टूडेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसका शेयरिंग रूल्स आपको क्या करने का है, नोट डाउन करना। So we have two buttons over here. For second is for the recalculate, and first is for the setting a new sharing rules for the student. So I am going to set a new sharing rules for this student object now, and to do that I need to click on new button to create a new sharing rules. Now this particular sharing rule required a label. So let's say SR1 for the sharing rule 1. Rule name is automatically being populated from the label. Now you can see there are two type of rules. First one is based on the record owner, and second one is based on the criteria. Okay, let me check something over here. Okay, एक चीज आपने यहाँ पे नोट डाउन किया है कि नहीं किया है पता नहीं मुझे, बट अब मेरे को पता चला कि एग्जैक्टली क्या रीजन है एक और का डेटा दूसरे और में शो क्यों नहीं कर रहा है। लेट्स ओपन दिस होस्ट इंस्ट्रक्टर, लेट मी क्रिएट, आई एम जस्ट ट्राइंग। हाँ, अगर ये सक्सेस होता है तो मैं इसका रीजन बताता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया है। लेट मी क्रिएट दिस न्यू, let's give it a name, let's say page, and the mandatory field is password, and the password request one, and let me save this. Now you can see the owner is second host instructor. Let me refresh this, let me choose the student object, and this student object, now I hope that particular data is restricted. May not be get that permission again. We can see this, though the owner has been set to second host instructor, it is now there in a host instructor. So I need to check what will be the uh,
problem over here. Let me set it to owner to third user basically. Let me change the ownership before we can cancel the permission and the developer. लेट इट बी। चलो हमारे वापस टॉपिक पे आते हैं। ये जो हम लोग सोच रहे थे वो नहीं हुआ। चलो इधर आते हैं। वी आर एबल टू सेट दिस शेयरिंग rules based on the two way. One is based on the record owner and second one is based on the criterion. So what is mean by based on the record owner? अगर एक रिकॉर्ड ओनर का डेटा दूसरे रिकॉर्ड ओनर को हमको शो करने का है बेस्ड ऑन दी ओनर। सपोज होस्ट ओनर, होस्ट इंस्ट्रक्टर एक ओनर है, सेकेंड होस्ट इंस्ट्रक्टर ये सेकेंड ओनर है। तो होस्ट इंस्ट्रक्टर का डेटा अगर सेकेंड होस्ट इंस्ट्रक्टर को आपको शो करने का मतलब होस्ट इंस्ट्रक्टर का ओनरशिप का डेटा, जैसे जो जो ओनरशिप में आएगा होस्ट इंस्ट्रक्टर के वो डेटा अगर आपको शो करने का है तो आप वो दिखा सकते हैं। सेकेंड आता है क्राइटेरिया बेस्ड। फॉर एग्जांपल वी हैव सैलरी फील्ड विद अस और मैंने क्राइटेरिया लगा दिया कि सैलरी फील्ड और द सैलरी ग्रेटर देन 1 लाख। तो ये क्राइटेरिया जो जो रिकॉर्ड फुलफिल करेगा, जिसका जिसका सैलरी 1 लाख से ज्यादा होगा, वो सारे रिकॉर्ड एक यूजर का रिकॉर्ड दूसरा यूजर देख सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। वेयर है 1 लाख के नीचे जिसका सैलरी है वो जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं दैट रिलेवेंट विद द ओनरशिप ऑफ होस्ट इंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, सेकेंड होस्ट इंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, तो कोई किसी का भी ओनरशिप का डेटा हो सकता है। लेकिन अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो फुलफिल किए हुए क्राइटेरिया का रिकॉर्ड ये एक यूजर दूसरे यूजर को शो कर सकता है अगर आप बेस्ड ऑन रिकॉर्ड पे शेयरिंग रूल अप्लाई करें। लेकिन अगर बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ओनर आपने अप्लाई किया है तो ओनरशिप का डेटा मतलब फर्स्ट यूजर का ओनरशिप का डेटा दूसरे यूजर के रिकॉर्ड को शो करेगा, राइट। तो आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। इफ यू चूज criteria based, then you need to choose a field on which field you need to apply the criteria. If you say country equals to, if you select this value is India, from here insert this value, तो जिसकी जिसकी कंट्री इंडिया होगी वो रिकॉर्ड, मतलब आपने रिस्ट्रिक्शन लगाया कि वन यूजर कैन नॉट सी द सेकंड रिकॉर्ड ऑफ सेकंड यूजर और सेकंड यूजर कैन नॉट सी द रिकॉर्ड ऑफ फर्स्ट यूजर। तो जैसे आप क्राइटेरिया लगाओगे तो फर्स्ट यूजर के अंदर जो भी कंट्रीज इंडिया में बिलोंग्स करती है वो सारी की सारी सेकंड यूजर को शो करेगी और सेकंड यूजर ने क्रिएट किए हुए डेटा के अंदर जितने भी कंट्रीज बिलोंग्स करेंगी इंडिया की वो सारे रिकॉर्ड सेकंड यूजर के फर्स्ट यूजर को शो होना शुरू हो जाएंगे। तो दैट इज द सिंपल थिंग। और इफ यू चूज दिस ओनर बेस तो डायरेक्टली जिस अब हमारे हमारे ओनरशिप के अंदर जितना रिकॉर्ड है वो सबको हम लोग शो कर सकते हैं। So this is the rule. You need to select either the record owner based or based on the criteria. फिर इधर दो चीजें आती है, वन आता है टारगेट और दूसरा आता है सोर्स और मतलब इसका डेटा किसको शो करने का है ना। सो वी नीड टू सिलेक्ट द इसका डेटा सिलेक्ट शेयर करने का टारगेट है ना, किसको शो करने का है। तो यहाँ पे वी हैव एन ऑप्शंस विद अस। वन इज द public group, manager subordinate groups, queues, roles, and subordinate. So you can select the element from there. Let's select roles, and if I select CEO, ओके तो सीईओ का डेटा मैं टारगेट यहाँ से सेट करूंगा किसके साथ, शेयर्ड विथ इसके साथ। सो यू नीड टू सिलेक्ट द टारगेट। ओके तो रोल सीईओ का डेटा, सीईओ हु इज द ओनर ऑफ दैट डेटा, वो डेटा आपको किसको शो करने का। सो वी हैव दैट ऑप्शंस विद अस। सो यू कैन सी वी हैव द ऑप्शंस कॉल्ड रोल्स, रोल सबऑर्डिनेट, ग्रुप्स, मैनेजर्स एंड ऑल दो स्टफ्स ओवर देयर। बट यहाँ पे क्यूज है और यहाँ पे क्यूज नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ओनरशिप का रिकॉर्ड अगर आप कर रहे हो तो क्यूज का डेटा आप किसी को असाइन कर सकते हो, किसी को शो कर सकते हो, राइट। लेकिन क्यूज को वो डेटा शो नहीं हो सकता। So basically that is the reason the queue is not present over here. So what I am going to do, CEO का डेटा हमको किसको शो करने का है, let's say CTO का, और I am going to do vice versa. Let's say CTO का डेटा हम किसको शो करेंगे, CEO को शो करेंगे। That makes a sense कि CTO is the lower
authority and CEO is a higher authority, तो CTO का डेटा CEO का हम लोग दिखा सकते हैं। And you need to specify the access level, सिर्फ डेटा रीड करना चाहिए या डेटा रीड राइट भी करना चाहिए, so you can set the access level from here. So अभी इधर इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि we write one sharing rule on which object we write the sharing rule on a student object. तो स्टूडेंट के अंदर हमने रूल सेट किया है ऑन रिकॉर्ड ओनर्स, तो सीटीयू के ओनरशिप में क्रिएट हुआ हुआ जो भी रिकॉर्ड होगा वो रिकॉर्ड हम शेयर करेंगे विथ whom, विथ सीईओ, राइट। एंड देन वी नीड टू सेट द एक्सेस लेवल, रीड राइट करना चाहिए कि सिर्फ रीड ओनली करना चाहिए, एंड देन वी नीड टू क्लिक ऑन सेव. You can get some message that the recalculation of sharing access will be continued in the background. You will receive the email notification upon completion. Do you want to continue? I would say yes, I want to continue. Once I click on it, set it correctly, and you can see that the message is pop up once again over here. It requires some time. And if you go to my student object now, you can see there is an sharing rule set it over here, और इधर लिखा है sharing rule operation is in progress. You can't create new owner based sharing rules for the student targeting the following groups. ये following groups को target करते हुए आप new sharing rules नहीं लिख सकते, दूसरे targeting areas आप choose करो, उसके लिए आप sharing rule लिख सकते हो. The initiating user will receive an email when each operation finish. जैसे ही ये शेयरिंग रूल्स अप्लीकेबल हो जाएगा वैसे ही मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक ईमेल मिलेगा विच डिनोट्स दैट द ऑपरेशन हैज बीन डन सक्सेसफुली, राइट. So whenever you get this mail that your sharing rule has been set successfully, you can see the following sharing rule has been सक्सेसफुली सेव्ड. इसका मतलब है कि शेयरिंग रूल्स हमारा प्रॉपरली अप्लाई हो चुका है. देन जैसे ही अप्लाई होगा वैसे ही ये शेयरिंग रूल कम्स टू एन एक्शन और एक ओनरशिप का डेटा दूसरे ओनरशिप के डेटा को दिखाएगा, मतलब सीटीयू का डेटा सीईओ को वो शो कर सकता है. तो in this way you are supposed to set the sharing rules. Okay, and the last one which we talk about called permission sets. Let's go to your permission sets, and to set the permissions we have permission sets over here. You need to click on this option called permission sets. So what is the use of permission sets? जिस तरह से वाइड डिफॉल्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि OWD के रिस्ट्रिक्शन हम लोग रिलीज कर सकते हैं बाय यूजिंग शेयरिंग रूल्स, उसी तरह से प्रोफाइल्स के रिस्ट्रिक्शंस हम लोग रिलीज कर सकते हैं बाय यूजिंग द परमिशन सेट्स. सपोज करो आपके पास में एक प्रोफाइल है विद द नेम कॉल्ड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, और उस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर आपने 3 यूजर्स क्रिएट किए और तीनों यूजर्स के लिए आपने बाय डिफॉल्ट एक परमिशन सेट्स प्रोफाइल के अंदर डिफाइन किया. तो प्रोफाइल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर कुछ चीजें ऑलरेडी डिफाइन और वो तीनों यूजर्स के लिए क्या होगी, अप्लीकेबल होगी. नाउ आई वांट टू रिलीज सम रिस्ट्रिक्शन फॉर अ पर्टिकुलर यूजर. 3 यूजर है, 3 में से एक यूजर के लिए मुझे ये जो परमिशन सेट्स प्रोफाइल के सेट है उसमें से कोई परमिशन सेट्स रिलीज करने के. For example, system administrator can read, write, and modify the data for the account object for user 1, 2, and 3. Now I would want to release some restrictions for the user 3. तो अब क्या करूंगा, आई नीड टू गो टू दिस परमिशन सेट, क्योंकि एक पर्टिकुलर यूजर के लिए मुझे चेंज करना है, बाकी प्रोफाइल is applicable for user 1 and user 2. So I need to go to the permission set. I need to create the permission set, and in that permission sets, I need to release that restrictions. Let's say सिर्फ आप read कर सकते हो, write और update नहीं कर सकते. तो ऐसी situation में मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा मेरे permission sets में, I will create a permission set, and in that permission set I choose the object or I choose the user, and उस यूजर के लिए मैं क्या करूंगा,
परमिशन सेट रिलीज कर दूंगा, तो क्या होगा, यूजर 3 आर नाउ एबल टू रीड राइट एंड अपडेट द डेटा, बट यूजर 1 एंड यूजर 2 आर नॉट बी रीड राइट और अपडेट। ओके, सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, परमिशन सेट्स अप्लाई कर सकते हो। नाउ यू कैन सी दिस, इफ आई minimize this, you can see we have already written permission sets over here. If you want to work on that, you can directly go and work on that. If you don't want to work on the standard permission set, then you need to create your own permission sets. And to create your own permission set, what you need to do, you simply need to click on new. जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने विंडो पॉपअप होगी. यू नीड टू पास द लेबल दैट इज परमिशन सेट ES1. ES1 stands for permission set. API name will automatically populate, and then you need to choose a license. कौन से लाइसेंस पे या फिर कौन से प्रोफाइल पे बेसिकली आप लोग ये परमिशन सेट अप्लाई करना चाहते हो, ये यहाँ से आपको चूज करना है. लेट्स क्लिक ऑन the license, and we know that we have a Salesforce license over which we create a profile for system administrator as well as my sysadmin. अगर आपको याद आता होगा कल परसों का लेक्चर, we create two kind of profile, my sysadmin और system administrator already है, जिसका लाइसेंस कौन सा है, Salesforce. So we choose this. Now we need to click on save. तो एक प्रोफाइल पे हमारे पास में राइट नाउ टू यूजर्स है. एक यूजर है होस्ट इंस्ट्रक्टर, दूसरा यूजर है होस्ट इंस्ट्रक्टर सेक्टर. अब परमिशन सेट्स में जो चीजें रिस्ट्रिक्ट की है वो चीजें हम लोग यहाँ से अनरिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे आप इधर जाओगे, यू कैन सी we have created a permission set PS1, and here you can see the ऑप्शंस whichever present in my profile, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं. assign apps, assign connect apps, object setting, app permission, apex class, visual force, page access, ये सारी सेटिंग्स यहाँ पे अवेलेबल है. you can also have a system permission, service provider, सारी चीजें वहाँ पे डिटेल में यहाँ पे listed format में. so if I want to make a changes in the object setting, so you can check on ऑब्जेक्ट सेटिंग. ऑब्जेक्ट सेटिंग्स में जाने के बाद में यहाँ पे सारी सेटिंग्स आ जाएगी. पहले तो ऑब्जेक्ट्स आएंगे, उसके सेटिंग्स आएंगे. नाउ यू कैन सी यू हैव अकाउंट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट परमिशन नो एक्सेस, टोटल फील्ड्स 42. जो सारी चीजें यहाँ पे गिवन है. सो इफ यू वांट टू मेक सम चेंजेस ओवर हियर, यू कैन डू इट बाय यूजिंग दिस एडिट प्रॉपर्टी. यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन एडिट प्रॉपर्टी. we need to click on okay, I need to click on that particular account to make the changes relevant with that account permissions. Now you can see we have this permission. अब देखो ये सारी चीजें जैसे ऑब्जेक्ट रीड राइट एडिट डिलीट व्यू व्यू ऑल एंड मॉडिफाई ऑल, ये ऑप्शंस हमारे पास में प्रोफाइल्स में हॉरिजॉन्टल वे में थे, मतलब रोज के फॉर्मेट में थे. यहाँ पे वर्टिकल फॉर्मेट में, यानी कि कॉलम्स फॉर्मेट में. सो बेसिकली ऑल दीज थिंग्स आर देयर, but it is in the vertical form. Here we have that same options in a horizontal format, sorry, in a vertical format, and profile में horizontal format. So you can see all the permission sets over here. You need to click on edit if you want to make some additions. Okay, if you want to make some edit operation over here. Now this account object tab settings, is it available? You can make it visible. If you want to provide some read write operations or relevant permission sets, you need to give by using clicking this button, and you just need to click on save. तो ये परमिशन सेट्स में हमने क्या किया, हमने ये परमिशन सेट किया, बट ये परमिशन किसको असाइन करने का है ना, बिकॉज अवर प्रोफाइल कंटेन 3 यूजर्स, यूजर 1, यूजर 2 एंड यूजर 3. 3 में से ये परमिशन आपने अलाउड तो किया है, लेकिन किसको अलाउड किया है, दैट यू नीड नॉट बी स्पेसिफाइड टिल दैट.
अब क्या करेंगे, अब उसको स्पेसिफाइड करेंगे कि यूजर 1 के लिए हमने ये रिलीज किया है परमिशन सेट, कि यूजर 2 के लिए किया है, कि यूजर 3 के लिए किया है। एंड टू डू दैट वी हैव द बटन कॉल्ड मैनेज असाइनमेंट. So you just need to click on manage assignment to assign that particular permission sets. Okay, and to do that, once you click on manage assignment, you have the button called add assignment. You just need to click on add assignment. Once you click on add assignment, you have all the users over here, and I would say I am going to release that particular restriction for the third host instructor. So I will select the third host instructor over here. अब क्या हो गया, अभी थर्ड होस्ट इंस्ट्रक्टर जो है आपका, उसको आपको असाइन करने का है. सो आई विल से शेयरिंग, शेयरिंग कर दिया है. नाउ माय थर्ड होस्ट इंस्ट्रक्टर गॉट दिस परमिशन सेट्स. तो अकाउंट ऑब्जेक्ट पे मैं रीड राइट वॉट एवर द ऑपरेशन देयर, वो सारे ऑपरेशंस में यहाँ पे परफॉर्म कर पाऊंगा. दो आई हैव रिस्ट्रिक्टेड माय प्रोफाइल, मेरे प्रोफाइल ने मुझे रिस्ट्रिक्ट किया है कि आई एम नॉट एबल टू एक्सेस द अकाउंट ऑब्जेक्ट, बट स्टिल बिकॉज ऑफ दिस परमिशन सेट, है ना, मैंने क्या किया है, मेरे रिस्ट्रिक्शन को रिलीज किया है. ओके, यू कैन सी यूजर ग्रुप शेयरिंग, यू कैन ऐड दैट पर्टिकुलर यूजर फ्रॉम हियर. आपको अगर चाहिए तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो न्यू शेयरिंग के लिए. लेट्स से आई विल से कि ये मैं देता हूँ पब्लिक ग्रुप को, यू कैन ऐड इट ओवर हियर एंड क्लिक ऑन रीड राइट परमिशन. यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन सेव. बस ये सेट हो चुका है. So if you go to your permission set and if you search for the permission set that is PS1, so I need to click on P. So you can go to PS1. जैसे PS1 पे जाओगे, you can see all the information present over here relevant with this PS1, right? So you can manage the assignments. इसको assign करने का है, क्या करने का है, आप यहाँ से assignment manage कर सकते हो, as well as you can set the permissions by using this permission settings. I hope you'll understand all those things which is relevant with the security management. मैं recall कर देता हूँ. OWD किस लिए होता है? ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अगर आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करने के, फॉर एग्जांपल आपके पास 3 यूजर है, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3. यूजर 1 का डेटा यूजर 2 3 को शो नहीं करने का, यूजर 2 का डेटा 1 3 को शो नहीं करने का, 3 का डेटा 1 2 को शो नहीं करने का है. ऐसी सच सिचुएशन अगर आपके सामने आती है तो आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कुछ सेटिंग्स कर सकते हो, कुछ परमिशंस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, एंड दैट इज गोइंग टू बी अचीव्ड बाय यूजिंग OWD. whenever you perform OWD, तो एक्सेस लेवल आप अलग अलग दे सकते हो. पहला एक्सेस था प्राइवेट, यानी कि यू आर कंप्लीटली हाइड द डेटा फ्रॉम वन यूजर टू अनदर यूजर. दूसरा आता है पब्लिक, जहां पे आप डेटा शो करोगे एक यूजर का दूसरे यूजर को. उसमें भी एक्सेस लेवल आता है. रीड ओनली अगर करते हो तो सिर्फ आप डेटा रीड कर सकते हो, डेटा रीड राइट नहीं कर सकते. अगर आपने एक्सेस लेवल दिया है रीड राइट, तो आप डेटा रीड भी कर सकते हो, डेटा मॉडिफाई भी कर सकते हो. और तीसरा ऑप्शन आता है रीड राइट ट्रांसफर, जिसमें आप डेटा रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, या फिर आप उस पर्टिकुलर डेटा का ओनर भी चेंज कर सकते हैं. दैट इज अलाउड फॉर यू. ये एग्जाम्पल को समझना है ना, तो आप एग्जाम एग्जाम का एग्जाम्पल समझो. मैं जो रियल टाइम सिनेरियो में बता रहा हूँ आपको कि रीड राइट ट्रांसफर कैसे होता है. whenever we give you a क्वेश्चन पेपर, तो क्वेश्चन पेपर सिर्फ आप रीड कर सकते हो, आप क्वेश्चन पेपर राइट नहीं कर सकते हो. whenever I give it you answer sheet along with the question paper, then you can write the data on your answer sheet. You can also read the data from your answer sheet. It means it is a read write access level. किसके पास में? आंसर शीट के पास में. रीड एक्सेस लेवल किसके पास में? क्वेश्चन पेपर के पास में. एंड रीड राइट ट्रांसफर, तो बेसिकली हाँ, आप लोग करते हो ऐसा, है ना, कि आप अपने दोस्त को आपकी आंसर शीट शेयर कर देते हो. वो क्या करता है, आपके डेटा में आपने लिखे हुए आंसर्स में से डेटा कॉपी करता है फटाफट फटाफट,
और आपको रिटर्न कर देता है। सो दिस इज अ ट्रांसफर। अभी कैसा है, अभी आप लोगों को सप्लीमेंट नहीं मिलता है ना, तो वो चीज कम हो गई है। पहले सप्लीमेंट मिलता था तो फटाक से सप्लीमेंट इधर से उधर कर लेते थे लोग। सो दैट इज अ ट्रांसफर। सो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आपने ये करना चाहिए। आई जस्ट रिलेवेंट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन विद द रियल टाइम एग्जांपल, ताकि आपको अच्छे से समझे कि व्हाट इज मीन बाय रीड राइट एंड रीड राइट ट्रांसफर। ओके, देन हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट द शेयरिंग रूल। शेयरिंग रूल कब आता है कि OWD के अंदर आपने कुछ परमिशन रिस्ट्रिक्ट करके रखे हैं, तो उसमें से कुछ रिस्ट्रिक्टेड परमिशंस को अगर हमको रिलीज करना है तो जनरली हम लोग शेयरिंग रूल्स लिखते हैं। तो शेयरिंग रूल्स जब हम लोग लिखेंगे तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हम लोग रिलीज कर सकते हैं। तो एक यूजर का डेटा दूसरे यूजर के डेटा को शो नहीं हो रहा है, लेकिन पहला यूजर हमारे ड्यू टू सिक लीव आया नहीं, तो उसका डेटा हमको चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में उसका एक्सेस हम किसी दूसरे यूजर्स को दे सकते हैं बाय अप्लाइंग द शेयरिंग रूल। सो इट विल रिलीज द रिस्ट्रिक्शन ऑफ योर OWD। और तीसरा आता है परमिशन सेट। इट विल रिलीज द रिस्ट्रिक्शन ओवर अ प्रोफाइल। तो प्रोफाइल पे अगर हमने कोई रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर दिया, लेट्स से टैब लेवल पे जाके हमने वो टैब को हाइड कर दिया है फॉर यूजर 1, 2 एंड 3, बट ड्यू टू सम रीजंस यूजर 3 को डेटा हमको शो करना है, वो टैब हमको शो करने का है, सिर्फ यूजर 3 को करना है, यूजर 1 और 2 को नहीं करना है। तो ऐसी सिचुएशन में वो पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन हमको रिलीज करना पड़ेगा फॉर अ पर्टिकुलर यूजर। And to do that, we have permission sets with us. We can set our permission, custom permissions. We can apply the release restriction on that particular object, on that particular field, on that particular tab or other things. और फिर वो हम लोग assign कर सकते हैं to the पर्टिकुलर यूजर, मतलब किस यूजर के लिए हम लोग ये परमिशन सेट्स दे रहे हैं, वो आपको मैनेज यूजर में जाके करना पड़ेगा। Okay, so with this, we cover all the components relevant with my security management, right? So we cover all those things relevant with the security management, and we finish with the security management. I hope you'll understand what we cover today relevant with the OWD, sharing rules, and permission sets. So with this, I am going to conclude today's session. If you have any question, anything in your mind, you can go ahead and ask me. Otherwise, we are going to stop over here. Thank you. This is all from my side. Thank you very much.